नमस्ते। आज आपके लाइव स्ट्रीम में स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोचर, विच इज क्रिएटेड रिटन डायरेक्टेड बाय एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस्ड बाय ऋषि मेहता, जिन्होंने दिल्ली क्राइम बनाई थी। दिल्ली क्राइम सीजन 1 बनाया था और ये सीरीज अभी बनाई है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लाइव स्ट्रीम, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इसी तरह के लाइव स्ट्रीम डिस्कशंस लाइक आपको देखने मिलेंगे वैसे, और प्रीवियस आप देख भी सकते हैं वैसे। सो यस, लेट्स गेट राइट इनटू इट, बट बिफोर दैट रणधीर भैया को इंट्रोड्यूस करते हैं, हु इज लाइक वो वैसे यूजुअली टीवी सीरीज के लिए आते नहीं है, लेकिन ही इज देयर विद अस टुनाइट वैसे। और द नेक्स्ट गेस्ट इज संदीप, जो कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री उन्होंने की है। लाइक इट दिस इज ये सीरीज एक वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर है, और उन्होंने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मार दी, मैं वही बोल सकता हूँ, क्योंकि ही वाजंट स्केड्यूल्ड ऑब्वियसली, लेकिन बोला कि कैन आई जॉइन लास्ट मिनट। आया, मैंने देखा है, सो ओके, मैंने चलो लाइक विदाउट वीडियो बोले तो चलो कोई बात नहीं। आए मतलब उनके व्यूज इंपॉर्टेंट रहते हैं मेरे लिए। सो यस संदीप, वेलकम एंड लेट्स गेट इनटू इट। डॉक्टर, कैसे, कब देखा आपने ये सीरीज और कैसा लगा? ये सीरीज तो अभी हाय संकेत, हाय संदीप, हाय एवरीवन हियर। सो ये सीरीज जो था ये तो आ रहा था प्रोमोस काफी टाइम से, एंड इट सीम्ड इंटरेस्टिंग, एंड या ऋषि मेहता एंड उनका क्रेडिबिलिटी काफी बढ़ गया है आफ्टर दिल्ली क्राइम सीजन 1 विच वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड वो एक बार उन्होंने छोड़ दिया, एक बार उन्होंने वहाँ का संभालना बंद कर दिया, फिर दिल्ली क्राइम सीजन 2 में क्वालिटी में फर्क दिख रहा था, और ऋषि मेहता के लिए रिस्पेक्ट क्रेडिबिलिटी बढ़ गई थी, तो वो कुछ नया ला रहे हैं। और आई थिंक ये सीरीज का अनाउंसमेंट कुछ 1 या 2 साल पहले हुआ था, एंड तभी उन्होंने जस्ट ये बोला था कि एक वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा बना रहे हैं विद दिव्येंदु भट्टाचार्य, बस इतना आया था। सो तभी मैं थोड़ा एक्साइट, तभी थोड़ा इंटरेस्ट तो आ गया था गिवन हिज क्रेडिबिलिटी। सो उसके बाद फिर ये देखा हमने, ये देखा मैंने, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस सीरीज। आई विल से the way Richie Mehta is able to execute his investigative series, it's really something एकदम बहुत बढ़िया तरह से वो एग्जीक्यूट करते हैं, स्पेशली जो मूड वो रखते हैं, द टोन वो रखते हैं, एंड इवन द स्क्रीन प्ले, इट इज टाइट लाइक एनीथिंग। एंड yeah, it by the end of the series you do tend to care about the theme, the subject of this जो पेश किया है, about conservation of nature conservation, about conserving wildlife, उसके बारे में you really tend to care. It becomes a big deal for the viewer whether our protagonists, our heroes, will be able to fight for the animals, and वो एक डेफिनेटली लगता है, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड लॉट ऑफ गुड स्टफ, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस वर ग्रेट, ईच एंड एवरी वन वाज गुड, एंड आई डोंट इवन नो हु किसका तारीफ पहले करूं। एंड also the way the whole thing has been designed, like there are animals who are like spectators to all the activities happening. It's like the humans are at play, they are doing their stuff, and one animal is just watching them as a this thing spectator around, as a bystander, and वो theme बहुत बढ़िया लगी। And even the way the cinematography, I mean the way the moments have been captured, and there is a certain quality to it. There is a lot of use of close-ups and shaky cams का बहुत use किया गया है, and that really shows. And there is a your diagonal, not exactly a Dutch cut, but a diagonal framing जो use किया है, that's really impressive. And the coloring, it is very, even the more brighter occasions are very dark colored. Like one character attends a wedding, and even the way that wedding has been captured, उसको बहुत ही to the theme of the series रखा गया है उसको. It's not like because it is that kind of function, so it is brightly lit. Or cinematography is very impressive, and the execution is
Brilliant. So yeah, I absolutely loved it. And the last few episodes, my God, nail biting like anything. I couldn't do anything else. I was just totally engrossed into the world of this series. And I really wanted stuff to happen. So I absolutely loved it, and I absolutely recommend this series to everyone. Yeah. बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। संदीप, आप बोले कि आपको कैसा लगा था ये शो? ओके, संदीप, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yeah. यस। First of all, Sanket, thanks for having me at last minute. I know you invited me beforehand, but since I was traveling, I couldn't join. But this is a show that I really wanted to talk about. So, first off, is my voice clear? हाँ, 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 बहुत Yeah, we बढ़िया, can बहुत hear बढ़िया। you. Okay. So, and thanks, doctor. And Poacher is like one of the near perfect web shows that we have had, as per me. Okay, and I would count Delhi Crime and Trial by Fire in one of the near perfect web shows. Uh, Coincidentally, all three are based around a real event and or events. And the other thing is, all three are made by a director. Again, Delhi Crime season one was directed by Richie Mehta. So all of these are directed by a person who has an outsider's gauge on India. So sometimes that outsider's gauge is even more penetrating than an insider making the same film. So Yeah. all the three बिल्कुल। shows for me are winning on that account. So first of all, like all kudos to Richie Mehta for making this hell of a show. And the other thing which I absolutely can't shut up about, I've been speaking in all my WhatsApp groups that I am part of, is Nimisha Sajan, the actress. Okay, and I have been a fan of her for past I don't know 7 8 years since I saw her in Tondimutlam Drikshaksham, the Malayalam film. She is a gem at what she does. Absolute gem. And it was time that the entire nation took notice of this kind of an acting talent that we have. And I'm so glad that Poacher provided her that because she breaks down, you break down along with her because you can feel the pain of the animals. When she breaks down with guilt, you can feel the guilt that is towering over her in terms of what her father, grandfather, and her ancestors have done. And when she shows the swag in the, so आप सभी को ही याद होगा अभी बहुत बार she has kept a, they've kept, there is this other take where she speaks to the politician. She knows that this guy will not break, I'll have to do something. She walks Yeah, from yeah. that room, enters this other interrogation room where the other guy is, and when she speaks to the politician, she knows that this guy will not break. I'll have to do something. She walks from that room, enters this आई other थिंक interrogation संदीप room where the की other guy आवाज़, मे बी संदीप लाइक Must बेटर be having कनेक्ट। some network issues. एग्ज़ैक्टली नेटवर्क इश्यूज़, But बट I got what he was trying to say. Yeah. एग्ज़ैक्टली। Nimisha was Sajayan is really a revelation, and yeah, she's been doing great. मैंने उनको I think नेट टू में देखा था इससे पहले, और ग्रेट इंडियन किचन I एग्ज़ैक्टली, think. मैं वही बोलने वाला था Yeah, she डॉक्टर। was in that. Yeah. हाँ, मैंने एक्चुअली ऑब्वियसली आई एम बैड विद फेसेस, तो मैंने जब ये देखा तो मुझे पता नहीं था कि ग्रेट इंडियन किचन में भी थे, क्योंकि ग्रेट इंडियन किचन मैंने 1 या 2 साल पहले देखा था। सो आई मतलब मैं भूल गया था कि ओके संदीप इज़ गॉन, बट वो आ जाएगा, वाइल्ड कार्ड एंट्री है तो वो तो आ ही जाएगा। यस, वैसे Yeah, आ yeah. We'll, आ we'll गए, we'll continue your discussion. Yeah. Oh, he's back. आ गए। Yeah. यस, Yeah. एक्चुअली So मैं वही yeah. बोल So रहा था yes. कि Yeah. Great मैंने Indian Kitchen and Natu, and yeah, she's quite a
talent. She needed this kind of role, this kind of portrayal that would really, हाँ, make her so एग्जैक्टली, visible. And yeah, the एग्जैक्टली। series और definitely provided डॉक्टर, it to her. डॉक्टर और संदीप, मैंने एक्चुअली देखा, गूगल किया था कि जस्ट कौन है, क्या है ये एक्ट्रेस, ये मैंने देखा। और फिर वो देखा था कि यार वो यहाँ पे मुंबई में ही, लाइक बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई है, और यहाँ पे केजे सोमाया कॉलेज में है। मैं बोला इतनी अच्छी एक्ट्रेस यहाँ पे, बोलो वो मलयालम लाइक पूरे बोल रहे हैं। और आई नो, देखो कभी भी अगर कोई, मैं खुद भी एक गुजराती हूँ, लेकिन हम यहाँ पे अगर जब भी कोई, हम मुंबई वाली गुजराती जैसे बोलते हैं वैसे, लाइक नॉट शुद्ध गुजराती विच पीपल टॉक इन गुजरात। लेकिन अगर इस एक्ट्रेस ने यहाँ पे मुंबई, ये बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई है, और प्योर मलयाली केरलाइट रोल लाइक प्ले कर रही है, और उन्होंने इतने अच्छे से वो पूरा ग्रास्प किया था, वो दो लोकल डायलेक्ट है वैसे। सो इट्स सच अ ग्रेट थिंग, ग्रेट अचीवमेंट बाय हर। वैसे मैं वही बोल सकता हूँ सच में। और मैंने लाइक प्रीवियस से फिल्म्स मैंने सिर्फ एक ही देखा। आप लोग ने नया टू बोला, और संदीप ने और एक फिल्म बोला जो मुझे नाम बराबर से आ नहीं रहा है, लेकिन यस, Yeah, एग्जैक्टली वो बोले, लेकिन मैंने देखी नहीं। लेकिन yeah. मैंने ये ग्रेट इंडियन किचन देखा था, और आई नो हाउ वेल दैट फिल्म वाज, हाउ, और वो कितनी अच्छी फिल्म थी। सो यस, आई आई वाज क्वाइट एक्साइटेड फॉर हर टू, लाइक फॉर दिस सीरीज, क्योंकि मैंने इस सीरीज के बारे में भी डॉक्टर, मैंने कभी अभी सुना नहीं है। मैं बोला कि यार क्या है, कौन सी है, ओके होती रहती है, आती रहती है सीरीज, ओके। और जब Yeah. इस सीरीज जब ये आई भी, लाइक आई थिंक फ्राइडे को, हाँ हाँ जी, फ्राइडे को जब ये आया, तो तब जाके मैंने नोटिस किया कि इट्स नॉट द टिपिकल समथिंग जो हम देखते रहते हैं, टिपिकल सीरीज जैसे कुछ, ये नहीं है वो, ये कुछ अलग है। और जब देखा, मुझे भी वैसे ही लगा, रणधीर की, जब ये अम, हम देख भी रहे थे, तो तभी मैं देख भी रहा था, तो तभी लग रहा था कि क्या, आपने बराबर पॉइंट आउट किया यार, कि क्या सिनेमेटोग्राफी है सच में। हर एक सीन डार्कली लिट जैसे है, जैसे हम कोई कोई हॉलीवुड की एक फिल्म या सीरीज देख रहे हैं जैसे, वैसे। सो कोई आई थिंक एक अब भी मुझे एक सिमिलर, लाइक इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड सिनेमेटोग्राफी के, अगर मुझे बात करें, तो मुझे एक सीरीज याद आ रहा था, डॉक्टर मिस्टर रोबोट। सो मिस्टर रोबोट भी ऐसी था कि जब भी आप वो देखोगे, ब्राइटली लाइक ऐसे सनी डेज रहते हैं, या फिर ऐसे रहते हैं, या वो भी वैसे ही एकदम डार्कली लिट किए गए हैं, जानबूझ के। हाँ, वो लाइटिंग यूजुअली बहुत डार्क रखा है टू सूट द ग्रिम टोन. That is एग्जैक्टली। definitely there, but that is definitely there, and it is really well used. जैसे gimmicky नहीं लगता है in lot of content जो आप देखते हैं उसमें gimmicky भी लगता है, such dark lighting, yeah, just for the sake of it put it there. But यहाँ पे ऐसा नहीं, it इवन really आपको, इवन suits the flavor of the story which they इवन रणदीप, जब have. भी आपने देखिए, मैंने नोटिस किया, जब भी देखिए एक एपिसोड आता है कि तभी उन लोग वो खोजने निकलते हैं पूरे जंगल में, हाँ, तो उन्होंने आई वाज, हाँ, वो मैं भी बोलने वाला था. एपिसोड 6 जो है, जिसमें वो आई थिंक इट इज कॉल्ड द हंट और समथिंग, जिसमें इट प्लेस इन अ नॉन लीनियर वे वेयर कैरेक्टर्स सम हाँ मंथ्स हाँ पहले, सम हाँ कैरेक्टर्स, ओ संदीप इज हियर, या. So the same characters are going to this visiting the same location sometime in a time gap, some months before, when the perpetrators were going, and now when the investigators are visiting the same site. So that particular episode is actually quite bright lit. नहीं, वहां पे. एग्जैक्टली, बट आई हाँ, थिंक एक चीज मैं बोलना चाहूंगा रणधीर, कि उसमें आप देखेंगे, उसमें भी काफी डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज पता चल जाता है, जस्ट इन द वे ऑफ कलर, लाइक जस्ट इन द वे हाउ दे color शॉट। grading. अगर आप देखेंगे कि प्रेजेंट वाले हैं, जब ये जो सीन्स है जहाँ पे इंस्पेक्टर्स हाँ, और सब जाते हैं, वो काफी डार्कली लिट जैसे किए हैं। लेकिन अब अगर वो पास्ट वाले जो भूतकाल में, flashback. वो फ्लैशबैक वाले सीन्स है उसमें, वो काफी ब्राइटली लिट जैसे हुए, आई वुड से। सो Yeah.
लाइक एक ब्रिलियंट तरीका है ऋषि मेहता का ही, आई वुड से, या उनके सिनेमेटोग्राफर का ही, कि वो डिफरेंस हमें ऑडियंस को दिखाने के लिए ओके कि कैसे लाइक कौन सी सीन्स अभी पास्ट में है, फ्यूचर और अभी प्रेजेंट में है, और अब ब्रिलियंट वे लोग बोलते हैं ना कि लोग फ्लैशबैक के लिए ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर लेते हैं। आई फील कि ये एक तरीका और अच्छा रहता है कि just to convey it some in different color tones वैसे, so it's a Yeah, this brilliant is like a absolutely brilliant take to show before the deed and after the deed. वो जो juxtaposition होता है ना, Yeah, वो contrast होता है rather, वो दिखाने के लिए this is a very good act. And actually, if you see, जो sixth episode doctor ने mention किया है, where it's basically the same trail, but it is being taken before the act and after the act. yeah, है ना? So before the act, the jungle is brightly lit. मतलब it shows a lot of things, right? कि मतलब the beauty of nature, कि इतनी अच्छी जगह है and all of that. And then when these people are actually following it, it is not as lightly as brightly lit to show that something has happened here. The jungle is not as pure or as pristine as it used to be. So that is a smart touch without telling us कि बहुत सारी मूवीज में होता है ना कि they'll give you that exposition. हम जहां से जा रहे हैं यहाँ पे कुछ हो गया है, हम उसी रास्ते को yeah. फॉलो, that बहुत on stupid your kind of face कर देते exposition हैं. they do ना, Yeah, that they avoided it through clear lighting, and that also was another master stroke. yeah, exactly. yeah. They really use the lighting to enhance the storytelling, and yeah, the cinematography, the lighting, the staging of shots, it really stands out in this show. They've used it in a very innovative way. Yeah. Exactly. सच में वैसे ही लगा था इवन। आप मतलब मैं देखूंगा कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी सीरीज हल्की सी स्लो है, लेकिन जब भी देखिए मुझे ऐसा लगता है आगे आगे जाके ही एक वाइड हर एक वाइड शॉट्स रहता है, जब यू सी कि मतलब वो पूरा जंगल दिखाते हैं वाइड शॉट्स के थ्रू, ऐसे लगता है। मैं अपने टीवी पे देख रहा था और ऐसे लगता है कि मैं एक आईमैक्स वाली एक फिल्म देख रहा हूँ, इतना मतलब वाइड शॉट्स से उन लोगों को पूरा जंगल दिखा रहे हैं, एंड इट्स जस्ट रॉ जंगल एंड इट्स जस्ट एनिमल्स। और एक भी पॉइंट में मुझे सच बोलूं ऐसा नहीं लगा कि वीएफएक्स एक लास्ट एक जस्ट सीन जैसा लगा कि ओके मतलब इतना अच्छा वीएफएक्स का काम नहीं किया था एज कम्पेयर टू पूरा सीरीज में इतना अच्छे से उन्होंने एकदम क्रिस्प क्लीन जैसा उन लोग ने वीएफएक्स का काम पूरा रखा है लाइक बाय वीएफएक्स तो ज्यादातर वो एनिमल्स, कंप्यूटर एग्जैक्टली। जनरेटेड एनिमल्स को दिखाने में ही यूज किया है. एंड as I told you, that's the major theme here. While whatever is happening in the story, the animals are more like bystanders. They were watching it. Even when they go to Delhi, you see the monkeys on the cables, on the cables. They are also watching these characters from a distance as they are investigating, as they are planning their this thing strikes. वो सब that's a continuous theme there. और एक थीम है ये फिल्म में कि ये सीरीज में कि स्टार्टिंग में there is a thing, a body of an elephant which is shown much later, and different animals of the jungle are just looking at that body, that corpse, and their reaction. There are tigers, there are vultures, there are crows, and they're just watching that body lying there. And then later on, it is revealed that how that elephant's corpse is such an important part of the, such an integral part of the story. So a lot of visual stuff has been used here to convey the message, and it all works well. I mean, you tend to care for it. You tend to care for the cause that our protagonists are fighting for. That's really something that stood out in this series, and it's told through a very visual technique, not through a very एक्सपोजिशन टेक्निक. जैसे संदीप ने अभी बोला कि कोई एक्सपोजिशन यूज नहीं किया, बट आई वुड से दैट एक मेरा पर्सनल क्रिटिसिज्म है अबाउट दिस सीरीज कि ओके। ये ऑलमोस्ट हर दूसरे एपिसोड में इट इज ग्रिल्ड हाउ इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज, एंड one of the protagonists is
always schooling or lecturing someone about it, वो थोड़ा मुझे ज्यादा लग गया. आई फेल्ट इट वाज उतने की जरूरत नहीं थी. हम समझ गए थे कि वी ऑलरेडी नो कि प्रोटैगनिस्ट क्यों इतना फाइट कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस कॉज. वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस बाय नाउ, बट यू डोंट हैव टू कीप फीडिंग अस अगेन. वो एक थोड़ा सा इशू है, मुझे लगा. others are free to agree or disagree with me on this, but yeah, that was one thing which I felt. Yeah. ओके, संदीप आपका क्या कहना है? संदीप ओके, फिर से मे बी कुछ टेक्निकल इशू रहेगा, नेटवर्क इशू. Okay. Anyway, we'll बट come back to Sandeep. तो तुमको क्या लगता है about it, संकेत? एक्चुअली मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम लगा नहीं, सच बोलूं रणधीर, कि मैंने जब भी सीरीज देखा भी, मुझे वो स्टोरी और वो जो वर्ल्ड बिल्डिंग था और वो वर्ल्ड था, वो मैं उसमें इतना इमर्स हो गया था कि लाइक देखिए, आपने जो जो ऑब्जर्वेशन वगैरह किए हैं ऑब्वियसली बहुत अच्छे, ब्रिलियंट, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन में एटलीस्ट मैं फर्स्ट वॉचिंग में मैं वो सब कर नहीं पाया इतना ज़्यादा. ऑब्वियसली मैं अगर मैं मुझे फ़िल्म को इतना अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है और ये सब करना है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स देखने हैं, तो मल्टीपल बार वो सीरीज़ या फ़िल्म देखनी पड़ती है वैसे. जस्ट वैसे रहता है. सो वैसे था. सो मैंने जब भी ये फ़िल्म भी ये सीरीज़ भी जब भी देखी थी, लाइक आई वाज़ सो इमर्स्ड इनटू ऑल दोज़ वो एस्पेक्ट जहाँ पे आप बोलेंगे कि लाइक वो सिनेमेटोग्राफी है, जो लॉन्ग टेक्स है, स्पेशली द लॉन्ग टेक्स, क्योंकि लाइक एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं. जस्ट इट्स लॉन्ग टेक्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो जो एक्टर्स की रॉनेस रहती है वो सब उसमें पता चलती है. सो it was quite good in this film. So वैसे उसी की वजह से I like this series so much. वैसे ऐसा एक पॉइंट भी नहीं आया कि यार कि बैकग्राउंड म्यूजिक ऑब्वियसली मतलब ऐसा कुछ लाउड था ऐसा का, क्योंकि हम लाइक यूजुअली लोग देखते हैं कि अरे वो कौन सा सीरीज रहते हैं, भूम 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 भूम, मतलब ऐसे कोई लाउड म्यूजिक वगैरह प्ले होते रहता है लाइक बैकग्राउंड में. ये इसमें ऐसा नहीं है, और वही एक चीज बहुत बेहतरीन लगी मुझे उसी की वजह से कि जो टोन एकदम सिंपल एक पेस पे जा रही है वैसे लगी है. और हर एक एपिसोड में एक एनिमल्स के शॉट्स है, जानवर के शॉट्स है, जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू लाइक इन अ वे ट्राइंग टू से समथिंग वैसे. एंड अनदर लाइक मैं और एट एंड भी जब भी आप देखेंगे तो वो सीजन 2 का कुछ टीज करना है, सब वो सब इन्होंने रखा ही नहीं है. जो भी है प्योर है, मतलब वन स्ट्रेट सीजन में भी वैसे. आई डोंट थिंक सीजन 2 का में भी कुछ रहेगा. आप लोग को लाइक डॉक्टर आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा, कुछ सीजन 2 रहेगा कि नहीं रहेगा? संकेत, इफ यू आस्क मी, इसका कोई सीजन 2 होना भी नहीं चाहिए. ठीक है. हाँ देयर आर एग्जैक्टली. सम शोज दैट आर मेंट टू बी लिमिटेड सीरीज. जो एचबीओ में आता है ना, लिमिटेड सीरीज, इट शुड एग्जैक्टली. एंड एट दैट. Once you hit the peak, then you just stop. Because anything Yeah. else you do after that will be a dilution. You are doing it because your season 1 worked. हाँ Yeah. So एग्जैक्टली. if you ask me, no, ho gaya. ओके. Poacher has created history in a way. It is one of the best web shows ever made in the country. You should just leave it at that. Instead of saying कि these people are going on another trail, वो कहीं yakuza से मिल रहे हैं, triad से मिल रहे हैं, that kind of complication I don't think is required. एग्जैक्टली. आई थिंक वो सेम हुआ था दिल्ली क्राइम में कि अभी ये एक केस हो गया, अभी चलो वही सेम इंस्पेक्टर्स और वही सेम कमिश्नर अभी वहाँ पे भी दूसरे क्राइम में जैसे लगे. हाँ. मैंने And if you see, Richie Mehta did not direct the season 2. Yeah, he did. एग्जैक्टली. So even I There is feel good reason why he similarly. didn't. Yeah. ओके. ओके रणदीप. Yeah, so even I share somewhat similar thoughts. I'm happy the way this season ended. I really don't, as an audience, I'm not craving for season 2. This ended on a good note, and I'm happy with that.
And yeah, Delhi Crime ka season 2 was quite, in hindsight, it seems quite unnecessary. Season 1, we got a good season 1, they should have just stopped at that. So even Poacher ke bare mein, I'll say the same thing. We got a good season, we got a good series. They should just stop at that. Baki season 2, if they make it, they'll just make it out of greed. That's all. Story to khatam ho gaya yahan pe. हाँ So एग्जैक्ट yeah, so as an audience, I don't crave for season 2, but I'm very happy with this one season that we've got. बट गाइज आप लोग को क्या लगा ये जो टॉपिक मैटर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सीरीज बनाई है और सब्जेक्ट मैटर पे आपको और इनसाइट्स जानने मिले जब ये सीरीज आई है और आपने देखी है सो हाउ शॉक्ड वर यू गाइज सीइंग कि सब इतना बड़े लेवल पे होता है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह क्या होता है सो अबाउट दैट सो उसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है थिंक संदीप Inside, okay, Sandeep बट बोलेंगे. वो तो हाँ एग्जैक्टली मे बी कुछ इशू हो रहा होगा टेक्निकल इशू नहीं प्लीज नहीं Okay, okay, बिल्कुल he's संकेत unmuted, he's थोड़ा सा unmuted. ब्रेक Let him हुआ speak. था सो इफ यू कैन जस्ट रिपीट दैट अच्छा अच्छा नहीं आई वाज टेलिंग कि देखिए सब्जेक्ट मैटर काफी लाइक नया भी था इसमें लाइक नॉट जस्ट टोल्ड लाइक बहुत कम बोला गया है लाइक वीरप्पन जैसे एक फिल्म आई थी आरजीवी ने बनाई थी उसमें एक थी हाँ सो लेकिन व्हाट डू यू वही है थिंक ना अबाउट देखो द वीरप्पन पे मैटर संकेत देयर आर मल्टीपल थिंग्स मेड ऑन वीरप्पन 2 वेब शोज ऐसे ही आ गए हैं ठीक है कनाडा में एक फिल्म आ गई है आरजीवी ने कन्नड़ा तेलुगु हिंदी में फिल्म भी बना दी है ठीक है दैट इज वेरी इजी टू मेक इफ यू आस्क मी बिकॉज वहां पे तुम्हारे पास एक चेहरा है वीरप्पन Yeah, who is already popular so it ties well with your screenplay कि एक वीरप्पन को दिखा के you can get all your viewings or whatever ठीक है recently Z5 पे भी yeah, वीरप्पन पे एक शो आया है in my terms more difficult yeah, to make because you don't have a face to put in there are hundreds of poachers in this country mm, currently poaching is a reality ये हो ही रहा है ठीक है and I yeah, come from a similar place in Odisha I know that this is a reality and you can never put a face to that person वीरप्पन एक बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज्ड एंगल हो जाता है ये सब दिखाने को बट these kind of random people who do the trophy buying kind of thing ना कि अभी मेरे पास बहुत पैसे हैं अभी क्या करूं नेक्स्ट I'll buy something that is very exquisite something like a tusk of an elephant it is very difficult to make yeah, a show around this especially in India यहाँ पे ट्रू डिटेक्टिव बनाना बहुत मुश्किल है it is a risk so that is why I'm giving all the more points to Richie Mehta to show because this is see by definition procedural में ना तुम्हारा हर episode के ending में there is a twist and you wait for the next episode this show doesn't fall into that game it doesn't play that game in fact yeah, and without playing that game that is the winning of the show मैं तुमको cliffhanger नहीं दूंगा this is not crime petrol and that is the win of the show yeah. एग्जैक्टली So my opinion is also going to be similar. See, जैसे कि संकेत ने starting में पूछा that how was this? Was it shocking to know that इतना सब हो रहा है about ये wildlife exploitation पे इतना कुछ हो रहा है, इतना capitalization हो रहा है? Is it shocking? No, it is not shocking. Lot of people already know how people are already doing it, how people are exploiting wildlife, how people are exploiting nature to fill their pockets. It's known to people, but for to create a show, to create a content which makes the audience care for this activity and to really care for nature, to care for conservation of nature, and to really root for protagonists who are trying to nab people who are exploiting wildlife. ये create करना, that is the difficult part, that is the genius of this show, that it gets the average audience to care for this particular cause. ये cause ये issue exist करता है, सबको मालूम है, but very few, especially cities में, तो I don't think people much care so much about it.
वो तो इस शो में भी बोला गया एक डायलॉग में कि जो एग्जैक्टली बड़े कि शहर में लोग रहते हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि ये सब हो भी रहा है, विच इज क्वाइट ट्रू। हम बड़े शहर के, हमको मालूम है ये कैसे, how less people care about it, but to create a show where people actually care for it, that is the big thing, that is the big win. And yeah, जैसे संदीप ने अभी बोला कि this show doesn't use that this twist element कि हर शो के हर एपिसोड के एंड में एक रिवील देना, and then in the next episode for people to just be addicted and to just keep piling on consuming episode by episode, वो tactic use नहीं किया है। And by without doing that they have created an engaging watch। and एक शो आई थी कुछ साल पहले, वो भी नॉन हिंदी इंडियन लैंग्वेज की थी, ऑन Amazon Prime itself, सुड़ल, which was in Tamil। वो I absolutely loved that show. It is one of the shows I would absolutely recommend to everyone. कौन Of सी course, in terms of in terms of themes, वो शो ये शो से अलग थी, बट जैसे संदीप ने बोला, that show used this technique कि हर एपिसोड के एंड में एक नया रिवील दे देते थे, एंड एक नया कौन सा ट्विस्ट डाल देते थे। या कौन सा शो बोले डॉक्टर? सुडल द वॉर्टेक्स, क्रिएटेड बाय पुष्कर गायत्री। ओ ये ओके ओके Amazon प्राइम पे ही आया था। सो आई that show used that technique. This show chose not to do it, and they did a good job. Like, you don't miss that technique, you don't miss that uh, a twist. They're not throwing twist at you left, right, center. They're not doing that, but they're still keeping you engaged. That's the beauty of the writing. नहीं सच में That's why one of the things I've heard these days, I don't know how true it is, जैसे बोलते हैं कि theater is an actor's medium, cinema is a director's medium। वैसे ये जो web shows और TV shows होते हैं which go on in linear format, which don't go on in standalone episode format, वो writer's medium होते हैं। तो वहाँ पे the major chunk of carrying on the show depends on the writing, and the writing here is rock solid। Yeah, एग्जैक्टली और इसी की वजह से एकदम टाइट स्क्रीन प्ले अच्छा, जहाँ पे भी जो भी जैसे था वैसे, मतलब एज एन एक ह्यूमैनिटी बेसिस पे भी तो आप देखेंगे हर एपिसोड में आपको पता चलेगा कि ओके कि क्या एक इंसान पे बीत रही है, एक इंसान जो इतने दिनों से सोया नहीं है और इतने दिनों से मतलब एक कंटाल गया है कि यार ये क्या कर रही हूँ मैं अब मेरी लाइफ में। मैं पहले बोर्ड सेंचुरी में थी और यहाँ पे अभी मैं इतने इतने बड़े इंपॉर्टेंट केस पे काम कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे नींद नहीं आ रही है। एक इंसान जिसका मतलब जिसको अभी कैंसर हुआ है और उसको मतलब उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर वो छोड़ लिया तो यार गया, मतलब ये सारी चीजें कोई दूसरा आके वो खत्म कर लेगा और उसको वो यकीन है उसके बारे में। और एक इंसान वो भी है कि वो मतलब एक जो अलग अलग फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है। एग्जैक्टली और वो मतलब एक अलग अलग लेवल पे वो ये चीजें काम करते हैं यार, क्योंकि देखो इवन जब भी वो इंसान जब भी वो सरेंडर करता है, जो मतलब एक आदमी रहता है हाँ, जो एक कैरेक्टर। वो गाइड जैसे रहता है, वो आता है और वो जब तब जाके वो भी उसको मतलब उसको भी उसका पर्सपेक्टिव भी दिखाया है कि उसको भी अच्छा नहीं लगता है जब भी उस हाथी को मारते हैं, जस्ट ऐसे ही मारते रहते हैं। तो कैजुअली, हाँ। एग्जैक्टली वो गिल्ट कैजुअली उसे खा जाता है, दैट आ गिल्ट जाता है गेट्स हिम एग्जैक्टली। टू सरेंडर। हम्म एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इसलिए तो मतलब ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, नॉट जस्ट वैसे वो हमें दिखता नहीं है, थोड़ा अंडर द लाइंस रहते हैं वो ये सारी चीजें, लेकिन क्योंकि लाइक मुंह खोल के जैसे नहीं बोलते क्योंकि दिस एपिसोड इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस कि ये कोई नरेट करेगा जैसे हर एक एपिसोड में लाइक हर एक एपिसोड के पर्सपेक्टिव से जैसे थोड़ा थोड़ा कभी कभार दिखाते रहते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस स्क्रीन प्ले व्हिच इज रिटन बाय द सेम गाय हु क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड द शो। an amazing show। जैसे आप दोनों ने बोला संदीप रणधीर की सीजन 2 नहीं आना चाहिए, आई डू फील द सेम कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर मतलब नहीं वो आना चाहिए। सेकंड सीजन में क्या मतलब अगर दिखा भी सकते भी नहीं है कि क्या दे आर जस्ट गोइंग इनटू सम अदर स्टेट के अभी हाँ दूसरे स्टेट में दूसरा कोई एनिमल प्रॉब्लम है और ऐसा कुछ प्रॉब्लम है और फिर जाके उन लोग जहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वैसे।
बट वो रॉनेस, वो वही सेम इमोशन जैसे दिखाना, आई डोंट थिंक सो वो सारी चीजें रिपीट कर सकेंगे इन दैट वे जो इस सीजन में दिखाया है वैसे. सो आई कंप्लीटली Yeah, अग्री विद जो उन्होंने बोला है वैसे. एब्सोल्युटली सर. yeah. और And और चीज. जहाँ तक एक्टिंग परफॉर्मेंस का सवाल है, ऑफ कोर्स संदीप मेंशन्ड निमिषा, शी इज एब्सोल्युटली brilliant here, and she's got a character which she can totally shine, she can totally this thing showcase her talent, she's got it. But बाकी के दो मेन प्रोटैगनिस्ट ने भी जो एक्टर्स प्ले कर रहे हैं उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया, जितेंद्र स्पेशली और दिव्येंदु भट्टाचार्य. Yeah, he's absolutely brilliant as Neil Banerjee. And yeah, I mean, from a casting point of view, I mean, after you write such a series, एक temptation कोई भी creator में होता है कि you get a popular actor or a known actor for this kind of role, and channelize on their popularity, वो एक temptation आ जाती है. But यहाँ पे उन्होंने they took an actor who's not who doesn't generally do these kind of roles. He either plays grey characters or negative characters ऐसा play किया और उनको ऐसा एक character दिया, and he totally looks that. I mean, just the way he expresses himself, the way he just carries off scenes, and I mean, he's just बहुत थोड़े में बहुत ज्यादा अपने कैरेक्टर के बारे में कन्वे कर देते हैं. एंड वन पर्टिकुलर सीन विच आई रियली लाइक, आई थिंक दैट वाज अ सिंगल टेक वन, जिसमें एकदम आई थिंक सेकंड लास्ट एपिसोड में होता है जहाँ पे उनको एक फोन आता है दिल्ली के वाइल्ड लाइफ बोर्ड का, एंड ही हिज कैरेक्टर नील बैनर्जी स्ट्रिक्टली डजंट वांट another agency interfering into that, and he has this elaborate phone call with the other uh, agency, and the way that whole phone call goes, and yeah, he's just pacing back and forth, and उसको लिया भी जिस तरह से, वो फिल्म भी की है जिस तरह से उसमें, एंड वो लास्ट में हालांकि वो सामने वाली को मालूम रहता है ही इज नील That is a बैनर्जी, single take, doctor. या That is what saying it makes was it a single effective. take. Yeah, single take, and also the staging, the way he's pacing the floor and the way he's pacing back and forth, and वैसे ही उसको capture किया, that rawness, and all of it worked. And of course, Divyendu Bhattacharya, the way he's acted it out, I mean, every minute every beat that he's following, you know what that character is thinking and how he's just trying to tackle the thing, and he just doesn't want this other agency to meddle in his case. The way he's shown that वो I saw it on repeat, वो scene, just that वो मैंने वापस देखा है पीछे जाके, watched it again just to see how it was shot, and I really loved it. Yeah. And also Absolutely. Roshan Matthews is brilliant. He's also played a character with many shades to him, and especially that scene जहाँ पे वो शादी, that wedding के बीच में he just gets bored of the wedding and he gets bored of the proceedings, and he decides to, on his holiday, he decides to work because it is boring, and he in his wedding outfit he goes and he conducts a kidnap, and the way he does it, and the way he comes back to the wedding still having crumples on his outfit of the struggle he had while trying to kidnap that, when that politician grabbed his neck, he's still having that crumples on his clothes as mark of that physical thing, that showdown that went just some time back, that was really good. And he's done a brilliant job. Even some of the people who played the poachers, the guy who decides to surrender first, and his entire guilt that drives him to, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया, and बहुत लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है. एक दिल्ली इन्वेस्टिगेटर भी, एक हवलदार who just joins them, and एक female हवलदार who just joins them, and she's just with them, and you know why she's joining them, and you tend to care for that character too for whatever limited time she's there. So yeah, lot of great performances. एग्जैक्टली. संदीप, आपको कैसे क्या लगा लाइक इस चीज इस सीरीज के परफॉर्मेंस में, एक्टर्स के परफॉर्मेंस में? परफॉर्मेंस तो यार निमिषा के बारे में मैं बोल ही चुका हूँ, ठीक है, अब कितना ही बोलूं.
She is the best actor of her generation, at least. Okay, and I believed this not because of Poacher, but like I've been following her work for the last 7 or 8 years since I first watched Thondi Mutlam Drikshaksham. She is at the peak of her game. But keeping her aside for a second, Divyendu. Divyendu has also been on the sidelines for quite some time. वो देवदी के टाइम से मेहनत कर ही रहा है बंदा. जमतारा में भी था. And wherever you place him, again, he gives the best. Roshan Matthew, uh, right? Again, a proven performer in Malayalam. Hindi, he did not get a good break in what was that Anurag Kashyap film, Choked. But in Choke, Darlings, yeah. he still made the best out of what he could. हिंदी एक फिल्म में But here और एक again, फिल्म में था. given हाँ नहीं, इवन रोशन मैथ्यूज बाय द वे और एक फिल्म में थे, हिंदी मलयालम फिल्म थी मुथुन करके, जो अनुराग कश्यप ने हाँ. प्रोड्यूस की थी और Muthu like thi, Muthu but was the not film, but that is not a Hindi film at all. I mean, yeah, Kamatipura and all that Mumbai sections dialogues were written by Anurag Kashyap for that. But yes, I would still consider it a Malayalam film. Again, brilliant performance, but in a pure Hindi film, he probably got a decent scope in Darlings. But again, a good actor. Here he got to show his range. That was again good. And the other thing that aided to the performance was that they kept their accents intact, which is why I was telling everybody in my friend circle at least to watch it in Malayalam, because in the original language, the language changes. हाँ Whenever they are in interior Malayalam and people are actually Malayali, they are speaking Malayalam. The moment it goes to Yeah. Delhi, again it shifts to Hindi. When it switches to Divyendu's house, the language becomes Bangla. Yeah. फिर ऑफिशियल इंग्लिश एक होती है ना, दैट इज ओनली एग्जिस्टेंट इन हिंदी इन इंडिया फॉर दैट मैटर, राइट? यू कैन सी वो जो बाबूपना होता है ना, वो निकल जाता है लैंग्वेज से. दैट इंग्लिश यू कैन सी. एंड Yeah. so at every level, the way they have changed the language and they've used dialogue writers to write dialogues in that particular language, that shows. Yeah. And even when Exactly. they're switching the languages, the languages don't become a barrier. They are all part of the same narrative, part of the same story. The switching doesn't hinder the story, the narrative, the storytelling at any point of time. That I feel is also something good they achieved. Yeah. नहीं इवन आप रणधीर संदीप ऐसे बोलो कि मैंने जब अभी मुझे ऐसा लगता था मेड इन हेवन मैंने जब देखा था, तो तभी वो जो इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट्स होते थे बहुत अननेचुरल मुझे लगते थे यार, सच में. अपार्ट फ्रॉम द वो स्क्रीन प्ले और वो जो कॉन्सेप्ट वगैरह है. Yeah, likewise for me. See, my problem with Made in Heaven and Archies and shows like that is not the English that is spoken. These are South Bombay people writing for rest of India. That will never work. Yeah, in some South Bombay circles, you will find people speaking like that, but that is a very small section of the country. If you look at the dynamics of the country, that is a very tiny section. Yeah. नहीं इवन इसलिए तो मैं वही बोला कि जब भी आप और संदीप ने बराबर से पूरा जॉट डाउन किया यहाँ पे कि जब भी आप मतलब दिल्ली में हो तो हिंदी बोल रहे हैं, जब भी आप एक्चुअली पेपर वर्क कर रहे हैं, जज के सामने पेश कर रहे हैं, और या फिर कुछ भी कर रहे हैं, या मतलब जो ऑफिशियल काम है हो रही है, तो वो सब में एकदम शुद्ध प्योर इंग्लिश वहाँ पे यूज हो रही है. और ऑब्वियसली वो इट डज रिक्वायर, वो नेचुरली जैसा दिख के आता है. संदीप आपने बराबर बोला. और जब भी हिंदी में जब भी कैजुअली बात कर रहे हैं, तो तभी ऑब्वियसली दे आर इन देयर कंफर्ट जोन के अभी इस बंदा ये और ये बंदी मेरे साथ इतना कंफर्ट रहे हैं वैसे. सो वो निकल के आ रही है और इट्स absolutely amazing. मैं वही बोलूंगा, like even the And performance. the attention to detail, because Nimisha Sajan's Hindi is 10 times better than most of the quote unquote Hindi actresses. Okay, she's born and brought up in Mumbai. Mumbai.
And if you listen to any of her interviews, right, when she speaks, you will not even guess that she's from Bombay. You will guess that she's from NCR. Her fillers are also Hindi. उसकी हिंदी Okay. इतनी अच्छी है. Okay. अच्छा Okay, her Hindi is like that fluent. Your Ananya Pande's and whatever the current crop is, they cannot match that Hindi any day. She speaks proper Hindi, जो colloquial Hindi जो बोली जाती है. But in this show, if you see her speaking Hindi, you can clearly make out that she is a Malayali who is speaking Hindi, you know who's Yeah. Sandeep, taking that She extra carries a effort. Malayalam accent in her Hindi. Yeah. That's exactly there. Okay, even Sandeep, if you exactly see मैंने her ये in her interview, she doesn't have any accent at all. In her But here Hindi. they have given her that. Yeah. That takes Attention effort. to That details. takes detailing. यही एग्जैक्टली मैंने यही सेम चीज मैंने वीडियो के थोड़े स्टार्टिंग में ऐसे बोली थी कि ये यहाँ पे लाइक मतलब जो कैरेक्टर तो ऑब्वियसली वो तो मतलब ऑब्वियसली केरला की है, लेकिन निमिषा है वो खुद बॉम्बे में पली बड़ी है। वो एक इंसान जो बॉम्बे में पली बड़ी है, लेकिन वो जब भी अगर बात करते हैं तो तभी एकदम प्योर लगता है कि केरलाइट ही है, और वो ही जैसे अपने प्योर केरला वाले एक्सेंट से जब भी बात करते हैं, इट शोज कि कितने नेचुरल, जैसे उन्होंने वो कितनी मेहनत की है वो एक्सेंट लाने में भी, और वो प्योर तरीके से पोर्ट्रे करने में भी। और आपने वही बोला कि वही जैसे एक्सेंट में हिंदी में बात करने में भी जब भी दिल्ली वाले सीन्स होते हैं वैसे, और अमेजिंग। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ऐसे हिंदी स्पीकिंग पार्ट्स भी होंगे उनके, लेकिन यस एक्चुअली थे, और सच में बहुत अच्छे थे। मैं वही बोलूँगा इस टाइम। बट यस रणदीप, आपको कुछ बोलना था? एक और चीज मुझे जो शो में अच्छा लगा, एक उन्होंने कुछ किया था, एक सबवर्जन टाइप, वो जो राज का जो कैरेक्टर था, द पोचर, who's the head poacher, most villainy of all the poachers, who's doing all these terrible deeds. He's built up in a big way up till I believe episode 4, and he's supposed to be hiding somewhere in Maharashtra Gujarat border. And normally, what you expect in a show is that they would show him alive and all ready to flee from there. But what they've done is they've suddenly killed him, and his body is just hanging there. And then he's just a lead for them who was built up as this huge guy, and then suddenly he's killed off, and he's no longer a viable lead to the investigators. They have to look for other people. वैसा कर दिया है, and much later जब episode 6 होता है, when they already found other leads, they have a flashback episode. जो flashback episode होता है उसमें where they build on his villain. I found it to be interesting. I mean, from a writing perspective, it would be easier जब you're already building him up as this big bad, तभी to show him alive and to show him do something, and then वहाँ पे what they chose to do is instead have him killed off there, and much later to show how menacing he actually was. So I felt that was something interesting they did there. Yeah. एग्जैक्टली सच में इवन देखो, मैंने रणधीर, मैंने एक किसी इंटरव्यू में पढ़ा था या किसी में ऐसे पढ़ा था कि अगर एक ग्रेट शो या फिल्म जैसे कुछ बनाना है, तो जिसके अराउंड मतलब कुछ बना रहे हो, एक पॉइंट आ जाता है, उसको मार दो, तो तब जाके तुम्हारी सीरीज या फिल्म है वो इंटरेस्टिंग बनेगी। सीरीज आई वुड से, लाइक ये पे लॉन्ग Yeah. फॉर्मेट शोज है, वो इंटरेस्टिंग बनेगी कि फिर जाके लोग को एटलीस्ट वो हुक्ड हो जाएगा कि ओके यार, ये तो हम लोग को लगा कि ये तो मेन था, अभी बचा तो कोई भी नहीं है, तो अभी क्या करें। तो आगे वो गेस करने के लिए गेसिंग वर्क चालू होता है वैसे। सो यही आई थिंक वो पैतरा उन्होंने यहाँ पे आजमाया है रणधीर की, कैसे मतलब कैरेक्टर को बिल्ड करके फिर उसे मार दिया है। हाँ एग्जैक्टली। सो इसलिए तो एग्जैक्टली। और आप लोग एक्चुअली गाइज, आप लोग बात कर रहे थे, बहुत एक फनी चीज अभी हुई है। भौमिक जो है उन्होंने बोला कि सीजन 2 विल बी ऑन टर्टल्स। हो सकता है जरूर। बट आई
ओके, मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, लेकिन यस, सीजन 2 ऑन टर्टल्स इसलिए तो अच्छा कटाक्ष था, लेकिन चलो ठीक है, बढ़िया है गाइज। थैंक यू सो मच गाइज इस डिस्कशन में आने के लिए। लाइक मोस्ट थैंक यू रणधीर का, जो मतलब ऐसे डिस्कशन में आते रहते हैं, और इवन संदीप का भी, जो मतलब लास्ट आ मोमेंट गए, लास्ट वाइल्ड मिनट कार्ड में आ एंट्री गए होगी। तो हमारे बुलाने पे। एग्जैक्टली, थैंक यू संदीप। एग्जैक्टली वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई। या संदीप, थैंक यू सो मच फॉर Yeah, दैट। thank you both of you guys, because I was sure that I'm not gonna attend. As you can guess from my background noise, there is a lot of noise. I'm still traveling interstate. But ओह, this is a movie that or a show that I wanted to talk to about. It एग्जैक्टली, it एंड या एंड आल्सो ऑन, hit एंड that थैंक hard. एक यू। लास्ट चीज बोलनी थी कि एंड आल्सो क्यूडोस टू आलिया भट्ट, जो जिनका साहस था इस सीरीज को बैक करने के लिए यार, कि like उनका डेब्यू था एज अ प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, और ऑन अ क्यूडोस टू सीरीज हर या ऑन अ सीरीज या एज मूवी तो उन्होंने And प्रोड्यूस की है, डार्लिंग्स या। ओके ओके, मुझे और पता नहीं। संकेत, यहाँ एक तारीफ करने वाली बात ये भी है कि आलिया भट्ट एट द एंड ऑफ द डे, लोग जो भी बोले हैं आजकल बॉलीवुड के बारे में या हिंदी सिनेमा के बारे में, बहुत कुछ बोल लेते हैं लोग, बट one of the few hardcore actresses that we have is Alia Bhatt. So being that she could see the same thing in Nimisha Sajjan is what I would like to believe. सच में, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसलिए, और वो इस और इवन आप संदीप, ये ऐसे स्क्रिप्ट को ऐसे लाइक सब्जेक्ट मैटर को सॉरी बैक करना, सॉरी। लाइक वेरी टफ Yeah, स्पॉट आई वुड से, it's और a वो ऐसे tough call. So full kudos to Alia Bhatt, like you said. या एग्जैक्टली। and a lot second Bollywood actor to actually back a good show. Sometime some years ago, Anushka Sharma backed Patal Lok. पता लो। She produced Patal Lok, and उसके बाद अभी Alia Bhatt is producing Poacher, which is a good show. Actually, the promotion team shouldn't have done something. There's this one particular snippet which they played during the promotion of Poacher, which has Alia Bhatt looking all tense into the camera, almost like she's a part of this show. वो नहीं करना चाहिए था, because the spoiler, she's not there in the show. तो जो शो के अंदर है नहीं, उनको दिखाना ही नहीं चाहिए था। हाँ नहीं, लेकिन डॉक्टर, ये मुझे एक 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 पुरानी चीज मुझे याद आई थी कि लाइक आई थिंक बहुत सालों पहले काल करके एक फिल्म आई थी, जो शाहरुख खान ने प्रोड्यूस की, और काल गाने में टाइटल सॉन्ग में शाहरुख हाँ, आया उसका था। टाइटल सॉन्ग में शाहरुख खान मुझे आइटम बॉय बन के आए थे मलाइका अरोरा खान के साथ। एग्जैक्टली, हाँ मुझे लगा कि शाहरुख भी रहेंगे, लेकिन एट द एंड तक मुझे लगा, लाइक फिर पता चला कि शाहरुख है ही नहीं इस, so वो एक टाइटल ट्रैक में है। सो वैसे काइंड ऑफ इसे एक प्रमोशनल जैसे, और फिर जाके पता था कि वो इस उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। इसमें भी आलिया भट्ट इस सीरीज के प्रोड्यूसर बट है, वो और जिस ठीक है, वो फिर भी एक आइटम सॉन्ग था, तो ठीक है, वो समझ में आता है यार। शी इज द वे दे प्रेजेंटेड हर एज अ ऑलमोस्ट लाइक अ कैरेक्टर इन द शो, तो ऐसा लोग सोचते हैं कि वो कहीं पे एक शी मे हैव अ कैमियो, बट शी डजंट हैव इट। सॉरी ओके, फॉर नो, having a cough right now, yeah. नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, इस शो में, इस डिस्कशन में आने के लिए। आशा रखता हूँ कि बहुत सारे लोग इस सीरीज को डिस्कवर करें और बात करते रहे, सो और इवन इस सब्जेक्ट मैटर पे भी बात करते रहे। ओके, एंड अंटिल देन, थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड टेक केयर डॉक्टर। मतलब अभी बोला कि थोड़ी तबीयत डाउन है, बट जरूर ख्याल रखिएगा। खुद खुद से दवाई लेके खुद खुद ही खा लीजिए अभी तो। डॉक्टर की तबीयत डाउन है इज काइंड ऑफ एन आयरनी यार. नहीं, तबीयत कुछ इतनी डाउन नहीं है, जस्ट हैविंग अ It's बैड like कॉफ, दैट्स ऑल। Nimisha Sajjan's character going and killing an elephant. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो ठीक है गाइस, एंड लाइक होप टू सी यू गाइस सून इन सम अदर वीडियो। Thank you, everyone.